All right. Hey everyone, I am Spursh and I welcome you all to today's session on the topic common mistakes that people make while speaking English. For the session today, we have speaker Miss Monisha Goel. Miss Monisha has experience of more than 15 years in teaching English. She has been associated to some premier institutes of the city. She has trained more than 1,000 students from all domains like engineering, medical, law, etc. She has also trained people from business classes, business people, housemakers, etc. So she's here with us today to share some of her knowledge. Over to you, ma'am. Thank you, Spursh. So as Spursh shared with you all, I'm Monisha and I'm a freelance spoken English trainer. और इन लास्ट 15 years में जब मैंने स्टूडेंट्स को हैंडल किया है तो आई हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर फ्यू कॉमन एरर्स विच जनरली पीपल मेक व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश एंड आज के इस सेशन में मैंने कोशिश की है उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने की एंड वी विल बी वर्किंग ऑन हाउ टू करेक्ट देम आल्सो एंड आई हैव इवन नोटिस्ड दैट नॉट ओनली बिगिनर्स, जो लोग फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करते हैं वो भी इनमें से कई सारी गलतियां कर जाते हैं. एंड आई नो यू ऑल विल अग्री विथ मी कि किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंट होना तो इम्पोर्टेंट है ही, मगर फ्लुएंसी के साथ साथ एक्यूरेट होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. एंड हम एक्यूरेसी तभी अचीव कर पाते हैं जब हम ये कैच कर पाए कि गलतियां कहाँ हो रही हैं. एम आई राइट? तो आज एक छोटी सी कोशिश है that hope is that this session will help you out by in identifying your errors and working on correcting them. So we will begin with the session and I would like to ask you all to keep a note of all the points which we'll be discussing here. In fact, you can take screenshots for future reference. And one more thing, there will be a quiz at the end of the session. So be attentive during the session and the winners of the quiz will be rewarded. Right. So here I'll come with, see, I have shared one point in my flyer also, that we often talk about office timings. We often ask people, what are your office timings? Yeah, what are your class timings? And do you all know that there is nothing like office timing or class timing? The right term is office hours and class hours, and not office timings or class timings. टाइमिंग वर्ड हम इनफैक्ट यूज करते हैं जब हम ये बताते हैं कि किसी भी चीज की राइट टाइमिंग होना. फॉर एग्जाम्पल, सचिन ऑलवेज हैज राइट टाइमिंग in hitting 6. Fine.
So we will now take up another mistake which we often make while giving our introduction. हम जब लोगों से मिलते हैं तो पहली चीज हम अपना इंट्रोडक्शन देना ही करते हैं, and we often see people using myself with their name. Like if I say myself Monisha, this is a wrong sentence structure. You know, the right sentence structure is, आप या तो बोल सकते हैं I am, like if I say, I can say I am Monisha, या फिर my name is Monisha. And the difference is, my name is Monisha Goyal, if I say, it is a formal way of telling name. And if you use I am Monisha, this is also a correct way and it is little informal. Now, why we should not use myself? I'll quickly tell in a few seconds कि myself एक reflexive pronoun होता है. Like आपने sentences सुने होंगे, I can do it myself, I myself will manage it. In these two sentences, did you notice कि myself जो है वो I के बाद आ रहा है. It is always followed by a subject pronoun. और जब हम introduction देते हैं, I am Monisha की में मैं I को हटा के यदि मोनिशा लेने की रखने की कोशिश करूंगी तो it becomes grammatically wrong. Hence, always remember that whenever you are giving your introduction, do not use myself. Instead, you can use I am. And its detail I have shared even at my YouTube channel, e-शिक्षक. आपको उसमें एक YouTube चैनल में इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसमें कि हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं. You will get in detail. We also make a mistake while telling about our siblings and relatives. हम अक्सर बोलते हैं I am having 2 brothers and a sister. Yeah, I am having a brother and a sister. So here also, this is a wrong sentence. We should use I have. I have 2 brothers and a sister. आप बोल सकते हैं I have a brother and a sister. And again, if I try to give you why it is wrong, जब भी हम कोई भी टेम्पररी एक्टिविटी की बात करते हैं, लाइक अगर आप किसी शहर में रहते हैं जहाँ पे आपका परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, you are there only for your studies or for your job, then you use I am living here. But people who have their permanent residence over there, they can say I live here. So having brother or sister is not a temporary thing. So we should use I have 2 brothers and a sister and not I am having 2 brothers and a sister. Seeing this sentence, do you feel that there is some mistake? We tell people that me and my friends went for a movie. Me and my cousins spent a gala time last night. In this sentence or any such sentence like this, जब भी हम किसी दूसरे के बारे में भी बात कर रहे हैं along with ourselves, we should always mention them first. हमारा sentence हमेशा शुरू होना चाहिए my friends and I went for a movie. It is a correct sentence and also a polite sentence. हमेशा दूसरों के बारे में पहले mention कीजिए and then talk about yourself. My friends and I went for a movie. And you know, many people often say that हम तो यही sentence सुनते आ रहे हैं हमेशा से और यही सही लगता है. And I know that the language which we speak is generally what we have been listening to. जो हम लोग हमेशा सुनते आते हैं वही हमको सही लगने लगता है. And although that is how we learn to speak our mother tongue also. Here we will be working on few corrective things कि जो शायद लोग unknowingly गलत बोलते आ रहे हैं और हम भी सुनते सुनते उसी को सही समझ के बोलने लगते हैं. We can catch them and try to correct them. Now coming to this sentence, जब हम कहते हैं he is my cousin brother. Now in this sentence, if I say
there is no need, there is no requirement to use brother at the end. You can simply say he is my cousin or she is my cousin. Now many of you will get the question, तो फिर कैसे पता चलेगा कि भाई है कि बहन है? So for this the answer is, see, at we have already mentioned you are using he as a subject or she as a subject pronoun. जब आप बोलेंगे he is my cousin, this he is specifying the gender, तो जो कि ऑटोमेटिकली पॉइंट करता है कि आप ब्रदर की बात कर रहे हैं. She is my cousin will specify you are talking about your cousin, the one who is a sister. आप अगर emphasize करके कुछ स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं तो यू कैन ऐड नेम एट द एंड. आप बोल सकते हैं ही इज माई कजिन रवि या शी इज माई कजिन शालिनी, राइट? सो डोंट यूज ब्रदर or sister with cousin. In all my offline classes, I often heard a statement, I came to class by bus or by train. But in this phase, when I am taking online classes, this statement, although I am not listening, means I don't come across this sentence, but then I want to share with you all, because we often reach by place to different places by some or the other means of transport. And the sentence, in the sentence, if you say I come here or I came here by bus or by train or by Uber or Ola, yes, you can even use by with Uber or by Ola. But if people say I came here by walk, it becomes a wrong sentence. जब भी आप पैदल चलकर कहीं जाते हैं, उसके लिए सही सेंटेंस जो होता है वो होता है ऑन फुट. आप हमको यूज करना पड़ेगा आई केम टू क्लास ऑन फुट. या आप रोज ही ऑफिस पैदल जाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई गो टू माई ऑफिस ऑन फुट. आप बोल सकते हैं आई वॉक्ड टू माई क्लास, बट डू नॉट यूज आई केम हियर बाय वॉक. Then in this sentence, which is quite a common sentence, हम अक्सर लोगों से बोलते हैं मेरा एक दोस्त है वो पायलट है. एंड क्योंकि हिंदी में हम बोलते हैं मेरा एक दोस्त पायलट है, एंड वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश इन द वे वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ पायलट. और आप अक्सर ये भी बोलते हैं वन ऑफ माय रिलेटिव इज इन भोपाल. जब हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं वन ऑफ, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन. हमेशा सेंटेंस होना चाहिए वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ पायलट, वन ऑफ माय रिलेटिव्स लिव्स इन भोपाल. एंड would you like to understand why are we using a plural noun there? The reason is हम बात कर रहे हैं बहुत सारे दोस्तों में से एक फ्रेंड की. So out of many we are talking about one. So one of my friend is a pilot, या one of my relatives live in Bhopal, या this is one of my favorite books. आप बोल सकते हैं भोपाल is one of the beautiful cities of India. See, the same expression you can use to talk about many things. It can be people, places, things, movies. Three Idiots is one of my favorite movies. So always remember, if you are making use of this expression one of के बाद का जो भी noun है वो हमेशा plural form में होगा. And many people who already know them, they will need to practice a little for a few days. थोड़े दिन याद रखिए, अगर वो इस सेंटेंस पे वर्क करेंगे तो then they will automatically use correct sentence whenever they frame using this phrase. We were talking about introduction. देखिए जब हम लोगों से मिलते हैं
तो पहली चीज जो हम जानना चाहते हैं उनके बारे में वो होती है उनका नाम. एंड इन हिंदी द पोलाइट एंड अ वेरी गुड सेंटेंस इज आपका शुभ नाम. और शायद क्योंकि वी आर in the practice of speaking Indian variant of English, or we can say we are in the habit of translating the sentence from Hindi to English. उस ट्रांसलेशन के कारण हमारा सेंटेंस क्वेश्चन क्या बन जाता है? What is your good name? So here there is nothing like good name or bad name. हमको नेम के आगे कभी भी गुड नहीं लगाना है. The right question to know a person's name is, what is your name? What's your name? We should never use good before the name. Then now we are all habitual of withdrawing money through ATM. आजकल शायद हार्डली कोई जाता है बैंक पैसे विड्रॉ करने के लिए. और जब हम लोगों को बताते हैं कि मैं एटीएम से पैसे निकाल कर आई या आया, या मुझे जाना है, या मुझे आई वांट टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम मशीन. So do you feel, reading at this sentence, are you able to catch any mistake in this sentence? Just try seeing it. And if I say there is a mistake, then you will definitely try to find out or make out some mistake in it. Yes, the word machine is not required in this sentence. आप simply बोलेंगे I want to withdraw money from ATM. Now why is machine not required here? You know what is the full form of ATM? ATM का full form क्या होता है? ATM is an acronym. ATM का full form क्या होता है? A lot many people feel it's all time money, anytime money. But no, the answer is ATM stands for automated teller machine. Teller is the person who takes and gives out cash in bank. जो कैशियर होता है बैंक में उसको हम टेलर बोलते हैं. And automated because when and why not automatic? It is not automatic but automated, because when we go to ATM we perform certain action, we enter pin and all, and then we get money. It doesn't work automatically. So that is why it is automated teller machine. और क्योंकि ATM में मशीन ऑलरेडी आ गया है, हमको उसके बाद मशीन लगाने की जरूरत नहीं है. So the right sentence will be I want to withdraw money from ATM and not ATM machine. And people are fond of attending parties and meeting people. Although during this COVID time we are all stuck at homes and mostly doing socializing on social media platforms only, but then we do not miss on complimenting people for their the way they dress, the way they carry their dresses. और उसके लिए हम लोग क्या सेंटेंस यूज करते हैं, या जनरली पीपल क्या सेंटेंस यूज करते हैं? her dressing sense is good or his dressing sense is good. Am I right? Then so now we will try to see that if we do not have to use her dressing sense is good, what can be the right sentence? So the right sentence is her dress sense is good. हमें जब किसी के choice of clothes या the way they carry their clothes अगर हमको पसंद आता है तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम उनकी तारीफ कर सकते हैं by using this sentence, her dress sense is good. Use of sentence dressing sense is not correct at all. See, in the series of discussing that what the errors are we make while speaking English, I also feel that we can discuss few things, that why has English become important in today's time? Why has it become important to
work on our English skills these days. So like everyone knows that it is a globally accepted language. Not only in India, it is spoken across world. And if we talk about higher education, सारी textbooks English में होती हैं, and even colleges use English as medium of their teaching. If a businessman knows English or has command over English, तो आप देखेंगे कि वो अपने clients और customers के साथ better connect बना पाते हैं. If we talk about entertainment world, now there is a lot of content, entertainment content, which is in English, like more than 68% on YouTube channel. Entertainment content on YouTube channel is in English. Even if we talk about Netflix, and there are so many platforms where you will find wonderful entertainment content in English. So, and मुझे पता है कि ज्यादातर सभी लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है. And if you know English, traveling becomes far more easier. और ये सिर्फ we are not talking only about traveling abroad. Even if you travel in our own country, there also you will find कि knowing English is going to be a great help, definitely. And last but not the least, we have so many websites, like more than half of the world's web pages, they are all in English. आपको कोई भी content search करना है या आपको कुछ upload करना है, if you have good hold over English, you have easy access to all these things. Fine, so then we will move on to our next point, that that is again a one common mistake. जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो व्हाट वी फील कि पास्ट फॉर्म ही यूज होगा वर्ब का. जैसे कि अगर हम बोलते हैं आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वेंट इज पास्ट फॉर्म ऑफ गो. तो जब हमने पास्ट की बात करी तो हमने क्या यूज किया, वेंट. बट देन वी एंड अप यूजिंग दैट पास्ट फॉर्म विथ नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो. जैसे कि अगर आपने बोलना है कि शी डिड नॉट रोट एग्जाम लास्ट ईयर, पीपल से जब उन्हें ये बताना है कि उसने एग्जाम में अपियर नहीं किया लास्ट ईयर, तो वो क्या कर देते हैं, दे यूज डिड नॉट रोट एग्जाम. जबकि अगर आपने सेंटेंस नेगेटिव बनाया है, यू वांट टू मेंशन एनी नेगेटिव सेंटेंस अबाउट पास्ट, योर स्टेटमेंट शुड बी शी डिड नॉट राइट एग्जाम लास्ट ईयर. With the helping verb did not, we always use first form of verb. I did not meet my friends, or I did not visit my hometown this summer. So they did not come to my place, they did not attend my party. Whatever the subject is, if you are telling something did not happen, पास्ट में कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि नहीं हुआ, नहीं किया, तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म आफ्टर डिड नॉट. सो द राइट सेंटेंस विल बी शी डिड नॉट राइट एग्जाम लास्ट ईयर. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, which is again a very common mistake made by people. जब आप किसी को मेल करते हैं या मैसेज करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि मैं आपको बाद में रिप्लाई करता हूँ या मैं आपको बाद में कांटेक्ट करता हूँ, तो जनरली द सेंटेंस वी गेट इज आई विल रिवर्ट बैक टू यू. सो आई होप यू ऑल गॉट व्हाट द मिस्टेक इज. इफ आई से द सेंटेंस इज रॉन्ग, कैचिंग अ मिस्टेक बिकम इजियर. जब तक हमें पता नहीं होता कि सेंटेंस गलत है, तब तक शायद हम नहीं कैच कर पाते कि क्या मिस्टेक होगी. बट इन दिस सेंटेंस द यूज ऑफ वर्ड बैक इज नॉट रिक्वायर्ड. रिवर्ट का मतलब ही है बैक. तो आपको सिंपली बोलना है आई विल रिवर्ट टू यू या आई विल रिवर्ट ऑन दिस ऑन ईमेल. देयर इज नो नीड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग बैक. Revert itself has back in this word. Like
people often say, although it's just a humorous sentence, बोलते हैं ना हम morning में morning walk पे जाएंगे कल. So do we need use of this morning with morning walk? Right. So at times we repeatedly use the words which is not required. Here there is no need to use revert back. We use I will revert to you. Fine. Then this the sentence which is there on the screen now. I prefer coffee than tea. When you get some guests home, घर में जब गेस्ट आते हैं तो हम उनको प्रेफरेंस देते हैं ना कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफी और टी. सो और इवन वी टेल पीपल कि हम कॉफी प्रेफर करेंगे, टी नहीं. Whenever we talk about preference, so always make use of to. Like you should say, I prefer coffee to tea. Then is used in that comparative sentences when you make comparisons, like he is taller than him, or she is a better dancer than her friend. Then is used when you compare the two things or two persons. But whenever you show your preference, the right word to use is to here. Fine. Then while making sentences like he do not have good sense of humor, in the sentences where you are making negative sentence about a person's every time habit or every time activity, in such sentences with subject like he, she, we should use does not. आपका sentence होगा he does not have a good sense of humor. He does not play cricket so well. When you talk about a positive quality, आप बोलते हैं he plays well या he plays wonderfully. But then if you have to make a negative sentence, the sentence will go like this. He does not have good sense of humor. He does not bat well. He does not listen to me. Do not use do not with he or she. During some occasion, like if in schools, colleges, or when a person comes with chocolates to celebrate birthday, so sometimes teachers also ask them to distribute these chocolates in the class. So what the people mistakenly use is they use between, distribute these chocolates between all the class. Between का हमेशा यूज होता है जब हम कभी दो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर ऑप्शंस दो से ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स दो से ज्यादा हैं, so the right word to use here will be among. Distribute these chocolates among all the students, among all of you. Do not use between. Between can be used only when you are talking about two people, two options. Like if you want to say there is no secret between us, that means you are talking about you and someone else. And अगर आप पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं है, तो यही सेम सेंटेंस क्या बन जाएगा? There is no secret among us. Okay, now we come to this interesting point. जब हमें किसी को ग्रीट करना होता है, विश करना होता है किसी की भी मैरिज पे, वेडिंग पे, तो बताइए हम लोग क्या करते हैं? कभी शायद आई ऑफन गेट कि पीपल समटाइम्स से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, कभी बोलते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, राइट? हैव यू एवर ट्राइड टू गिव इट अ थॉट कि इसमें से कुछ गलत हो सकता है या दोनों सही हैं? देयर कैन बी अ ट्विस्ट. ऐसा नहीं है कि मेरे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है तो वो हमेशा ही रॉन्ग होगा. You can even say that yes, the sentence can be wrong, right as well. But then yes, if it is written here, there is something which we need to work on. Here also, happy marriage anniversary actually is not a right way to wish anybody.
to wish someone happy wedding anniversary, we use wedding, happy wedding anniversary. Now, ऐसा लगता है ना कि दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं दिखता है या कुछ साउंड नहीं करता दोनों में डिफरेंस, राइट? सो द थिंग इज, मैरिज एक्चुअली इज एन इंस्टीट्यूशन. शादी, मैरिज इज अ संबंध, जो इंस्टीट्यूशन, जो होल लाइफ पीपल विल हैव टू स्टे टुगेदर, दैट इज व्हाट मैरिज इज. लेकिन वेडिंग इज दैट सेरेमनी व्हिच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस डे को दोबारा, वही सेम डेट जब आती है, देन वी ग्रीट पीपल ना, हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं ना, वी सेलिब्रेट दैट सेरेमनी, दैट डे. So that is why the right sentence is happy wedding anniversary. And marriage is that relation, that sambandh that will remain forever. Fine. Now moving on to the next sentence. See, remember I earlier told you all that there will be a quiz at the end of the session, and you need to be very attentive during the session. So now the next sentence here is, I am in the bus. I will call you later. You know that errors, we are talking about errors, and as I told that during my class, these are the errors which I identified while taking my sessions. अभी हम लोग ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं जिसमें कि सैटरडेज को रेगुलर ग्रुप डिस्कशन सेशंस भी होते हैं, और सभी जगह हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो रेगुलर बेसिस पे टॉपिक्स में डिस्कशन के वक्त हम यूज कर रहे होते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर quite often used wrong by mostly all the speakers. मतलब I am not talking only about beginners. जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं वहां भी कई बार या ज्यादातर इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे गलती कर जाते हैं, बिकॉज मे बी नेवर ट्राई टू सी दैट देयर कैन बी एनी मिस्टेक इन सच थिंग. और एरर्स जो है वो हो सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड भी हो सकता है, समटाइम्स इनकरेक्ट यूज ऑफ prepositions or conjunctions is also there. So in this sentence, use of this preposition in is a mistake. जब भी हम किसी बड़ी व्हीकल पर होते हैं या फिर पब्लिक व्हीकल में ट्रेवल कर रहे होते हैं, then we use on. I am on the bus. लेकिन अगर हम बात करते हैं पर्सनल व्हीकल की, like if you are in your car, in your own personal vehicle, then you can use in. लेकिन किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ऑन यूज करेंगे. बट देन योर बाइक एंड स्कूटर इज एन एक्सेप्शन. उसमें आप इन नहीं हो सकते, यू विल हैव टू यूज ऑन देयर. दे आर पर्सनल व्हीकल्स एंड स्मॉल टू, लेकिन वहां पर आपका यूज होगा आई एम ऑन माई बाइक. एल्स if you are traveling by metro, by bus, local bus or any other means of transport, आपको बोलना है I am on the bus, I am on the metro, I am on the train and I am in the car. See, the points, the things which are I just now shared with you all are those few points which I often come across while taking my classes, and there are numerous. मतलब हम बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करते रह सकते हैं, बट आई नो दैट एवरीवन अग्रीज कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ अगर जानने की कोशिश करते हैं तो वी एंड अप इम्प्रूविंग नथिंग. सो इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. हम धीरे धीरे छोटी छोटी गलतियों को कैच करके उन पे वर्क करते जाते हैं, एंड दैट इज हाउ वी कम आउट टू बी अ परफेक्ट स्पीकर. So I I am starting new batches from tomorrow, and there will be like 2 levels of classes, and for that the details you will get on your email. So now it's quiz time. See, the first question in the quiz is here. After I read out the question, you all will get 10 seconds to post the answer in the chat box.
and the first right answer will be considered as winner. So the question is, if you have a new smart TV at home and you want to tell your friend when you bought it, what would you say? I bought it last week. I have bought it last week. I will have bought it last week. So you just have to write A, B, or C option in the coming 10 seconds of time in the chat box. Fine. So now the second question in the quiz. For the question, where did you meet him? What will be the right answer? I didn't meet him today. I meet him at the theater. I met him at the theater. So your time starts now. I know people are typing in the chat box, but then I am not seeing that. I am going with my flow. Your answers will be checked soon. So now move on to the next question. In this question, you have to pick the wrong sentence out of these three. First one is, somebody have come to see you. Nobody has understood the concept. No one has come. Fine. Right. Fine. So the next question is, what would you say when you talk about your likes? What will you be your right question? She likes to get wet in the rain. She loves to get wet in the rain, or she likes getting wet in the rain. Okay. So here is the end of the quiz. There were 4 questions in the quiz, and I know there are so many answers. There are so many answers in the chat box, and yes, Sparsh will be checking them out. That who has done the who has given the quickest answer. Till he comes with his result, let's discuss few things. See, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यदि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो यू आर मिसिंग अ लॉट या आप कुछ बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आई विल डेफिनेटली से दैट इफ यू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स इन इंग्लिश, you can open up larger opportunities for your growth, for your personal and professional growth. If you are a speaker, and in fact if not a speaker, you can reach out to a larger audience. अभी आप शायद कुछ limited लोगों के साथ confidently communicate कर पाते हैं. If you work on your speaking skills, if you work on your English speaking skills, you will be able to reach out to, in fact, larger audience. इवन आप जॉब के लिए आप ज्यादा ऑप्शंस ओपन अप हो जाएंगे आपके लिए अगर आपने इस स्किल पे अपना वर्क किया है तो. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, and in fact I think Sparsh would have got the results. Sparsh, have you seen yes ma'am, but before that I think can we like tell the correct answers as well to the people? Right, fine, we can discuss them. So I'll go back to those slides. Fine. So let's take this first question. You have a new smart TV at home. You want to tell your friend when you bought it, what would you say? So the right answer for this is, I bought it last week. A option is correct. And I just want to add one quick tip over here.
कि अब अभी यहाँ पर शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा आई हैव बॉट इट लास्ट वीक भी तो करेक्ट हो सकता है, राइट? सो द थिंग इज, जब भी हम आई हैव बॉट यानी कि वी कॉल इट प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर, जब भी हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, आई हैव बॉट इट, इसके साथ कभी भी पास्ट शो करने वाले टाइम एलिमेंट्स को यूज नहीं किया जाता है। लाइक अगर आप बोलते हैं आई हैव विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर, दिस ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग। आप बोलेंगे आई विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर, और अगर आपको लास्ट ईयर ही मेंशन करना है तो आप बोलेंगे आई विजिटेड देयर लास्ट ईयर, और सिर्फ आपको ये मेंशन करना है कि मैं वहां जा चुकी हूँ या जा चुका हूँ, तो आई हैव विजिटेड दैट प्लेस without the mention of the time element. Then the next question is, where did you meet him? And if the question is about past, the answer always goes in the second form. तो इसका C option correct होगा, I met him at the theater. The answer will be I met him at the theater. And for the this question number 3, the sentence somebody have come to see you is a wrong sentence. देखिए जितने भी ये जो वर्ड्स होते हैं ना, somebody, nobody, anybody, someone, no one, anyone, ये सारे सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, दे आर ऑल सिंगुलर वर्ड्स। तो सिंगुलर वर्ड्स के आगे हमेशा हैज का यूज होता है, नॉट हैव, एंड दैट इज व्हाई somebody has come अगर होता तो करेक्ट होता, लेकिन somebody have come to see you is a wrong sentence, and the other two are correct because nobody has understood the concept, no one has come, these two are singular and we are using has after it. And then in the question, what would you say she likes to get wet in the rain or she loves to get wet in the rain? Here third C option, she likes getting wet in the rain, is correct. Now here the reason is, इसका भी एक बहुत बड़ा एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षक पर शेयर किया हुआ है कि जब भी हम अपनी लाइक्स या डिसलाइक्स की बात करते हैं तो हमेशा जिरेंट्स का यूज करते हैं। जिरेंट्स आर दोज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज नेमिंग वर्ड्स। आप जब भी लाइक, लव, हेट, आई एम फॉन्ड ऑफ, इस तरह के वर्ड्स के बाद कोई भी एक्टिविटी के नेम की बात करेंगे तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगी। और इसीलिए अगर आप अपने इंट्रोडक्शन देते वक्त जब आप बोलते हैं ना कि माय हॉबी इज, इसके बाद सारे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ड्स आने चाहिए। माय हॉबी इज रीडिंग is correct and not my hobby is to read. And same, she likes getting wet in the rain is the correct sentence, right? So Sparsh, these are the right answers for the quiz. Can we get the winners? All right. Yes, ma'am. So we have four winners for it. So I'll just announce the names. The first is Mr. Arnav Methil. Second is Miss Prarthana. Third is Shubh Agrawal, and fourth is Roshni Soni. Wonderful. We can clap for all the four winners. Fine. Wonderful. So these are the four winners, and yeah, ma'am, if you want to continue. Right. So thanks a lot for listening so patiently, and congratulations to all the winners. You will get your rewards, and the reward, as you all have seen, that the whole session is about learning, speaking English, correcting English. So definitely reward will also be somewhat related to it. So you will get 50% discount on the course fee for any period of the time. Whenever you will come to join the course, you will get 50% concession or discount for the fees. That is your reward. So congratulations all four of you. We can clap for them. Fine. So I hope and I wish you all will practice on the points which we have discussed today, and maybe some point of time in the future I'll try to come up with some good sessions like this, where I would love to share few more things from my journey of teaching English. Right. Thanks, and bye bye all of you. All right. Thank you so much, ma'am.
And as Monisha ma'am already said, so the details of the courses will be mailed to you as well as sent to you on the WhatsApp number. And you can contact us if you have any queries. You already have the email ID. It's goyalmonisha74@gmail.com. I believe you would have received the mail from it only. So you can reply to it if you have any doubts related to any course or any English related query. Also, you can connect to Monisha ma'am on LinkedIn, and I have pasted her LinkedIn link also in the chats. Okay. Thank you so much. Fine. Thank you everyone for joining. Bye-bye. Thank you.